नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की। एंड आई नो इट्स लाइक वेरी कॉमन थिंग व्हेन एवर यू विजिट द डॉक्टर, डॉक्टर सेड आपके रिपोर्ट सब ठीक हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता नहीं। डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं, देन ऑल्सो वी लाइक वी आर अनएबल टू फाइंड द रीजन एंड दैट वेरी मोमेंट वो एक टिपिकल सा वर्ड आ जाता है जिसे हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड। एंड हम सोचते हैं कि मेरा सब कुछ ठीक है, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देन आल्सो डॉक्टर इज सेइंग अनएक्सप्लेन्ड। सो एक्चुअल में अनएक्सप्लेन्ड है क्या? और अगर मेरा फर्टिलिटी ही अनएक्सप्लेन्ड है, सो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू गेट प्रेग्नेंट? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू बिकम अ मदर? सो ये बहुत ऐसे सवाल हमारे दिमाग में गूंजते हैं जब हमें पता चलता है कि डॉक्टर इज सेइंग दिस थिंग अनएक्सप्लेन्ड। एंड यू नो व्हाट, अनएक्सप्लेन्ड का आंसर ढूंढना ही बहुत मुश्किल टास्क है अपने आप में। सो वी जस्ट stay with us, and we are going to invite our guest doctor on the main screen. And एक चीज और, I'm so sorry if my network is little bit hazy. आज कुछ issues है हमारे एरिया में, I'm so sorry for that. So this special awareness session has been arranged by UNS, और हमारे जो स्पेशल गेस्ट या स्पेशल डॉक्टर हैं वो भागलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एंड व्यूअर्स, आपके ही रिकमेंडेशन पे वी आर कॉलिंग डॉक्टर इमराना अगेन टू our live session. So please let's welcome Dr. Imrana to this session where we're going to talk about this unexplained thing. Namaskar, doctor. Welcome again to Fertility Dost. Namaskar. Very happy that again you people have invited. You loved me. With all your blessings, I'm here, and your best wishes gives me really lot of impetus to work, and I'm being reciprocated. That's the happiest part of it. Thank you so much, Dr. Imrana, and thank you, UNS, for arranging this. Dr. Imrana is the director of Janm IVF from Bhagalpur. She is, and amazingly, इनके एक लाइव के बाद हमारे पास इतने सारे क्वेरीज आए कि वी थॉट कि लेट्स कॉल हर अगेन। सो डॉक्टर, आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, एंड आई नो द वर्ड इटसेल्फ इज quite unexplained. So first of all, the very common question कि डॉक्टर हमें अनएक्सप्लेन्ड की कैटेगरी में क्यों रख देता है? व्हाट कुड बी द रीजंस कि हाँ भाई आप तो अनएक्सप्लेन्ड में आ गए? सो प्लीज। Yeah, unexplained infertility is almost 30% of the cases of total infertility, right? Like it is prevalent. Like if we have the male factors and the female factors, that accounts to total 70% of the cases. And in 30%, we find it unexplained. But the unexplained means when everything is okay, your baseline tests of the female, which is the tubal patency test, tubes are open, oh, you're getting ovulated in the right time, you're getting ovulation studies are open, follicular tract, which we get to do by an internal ultrasound, that is transvaginal sonography, that is perfectly all right in synchronization. And the no, semen parameters, that is the sperm count, morphology, motility, everything is perfect. So when these basic tests are all right, and still we are not getting what we are wanting, and we are really desperate, the patient, the couple, and they become fidgety and they keep doctor shopping. They're really tired and drained thoroughly, because nobody is finding any perfect reason and to strike what exactly has gone wrong and why the couple is not getting pregnant. Basically it is not it's not really unexplained anything. When we go meticulously to the details, when we go जब हम इसकी गहराई से हम एक एक
सब चीज़ों को फिर से एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। वो हम एक एक करके हम बताएंगे जैसे हम लोग कॉन्वर्सेशन अपनी आगे ले जाएंगे। तो वो हर लेवल पे हो सकती हैं, अंडों के लेवल पे हो सकती हैं, ट्यूब्स के लेवल पे हो सकती हैं, और शुक्राणु के लेवल पे भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को फिर से री लुक और री एनालिसिस की ज़रूरत होती है, और वो काफ़ी गहराई से इसकी फिर से जांच करनी पड़ती है, जो आम जनरली जो क्लिनिशियंस होते हैं वो ओवरलुक कर देते हैं। तो दैट 30% का स्तर है वो गिर के 5% हो जाता है। तो देर इज ऑलवेज एन एक्सप्लेनेशन टू इट, एंड देर इज नथिंग कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड। वी एंड देर इज अ रेमेडी टू इट, उसका निवारण भी है और बहुत बेहतर है। तो स्टेप वाइज विल गो अकॉर्डिंगली एज यू कीप ऑन। या सो डॉक्टर, सबसे पहला सवाल, यूजली दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, लोग कहते हैं एक डॉक्टर के पास मैं गई, उन्होंने बोला अरे आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, सो अनएक्सप्लेन्ड है। सो हमें लगता है कि अरे डॉक्टर ने कुछ गलत बोल दिया, लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर डॉक्टर, एंड we just, as you just mentioned about this doctor shopping, and it is very common nowadays, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर ने भी कहा अनएक्सप्लेन्ड है। अब व्हाट नेक्स्ट? सो आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि व्हेन डॉक्टर इज गिविंग अस दिस टैग ऑफ अनएक्सप्लेन्ड, सो हमें कौन से ऐसे टेस्ट हैं या कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पे फोकस करना शुरू करना चाहिए? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वील जस्ट डिस्कस अबाउट द फीमेल फैक्टर, देन वील फोकस अबाउट द मेल फैक्टर्स। तो फीमेल्स में ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू यू आपको लगता है कि व्हेन डॉक्टर सेड दैट यस यू आर इनटू दिस अनएक्सप्लेन्ड, सो प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स। फीमेल्स में बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, जो सबसे बेसिक टेस्ट जो होता है वो होता है हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राम, एंड यू फाइंड द ट्यूब इज ओपन। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड टू स्ट्राइक द सटल डिटेल ऑफ दैट when a good fertility specialist, when he or she views that particular plate, we can make out the difference कि वो जो हम देख रहे हैं ट्यूबल, जो उसका स्पिल देखते हैं, दोनों तरफ ट्यूबें खुली हुई हैं, बट ये निर्धारित करना कि उसकी फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, खुले रहने के बाद भी वो खुले रहने जैसा ट्यूब काम नहीं करती है। वजह यह है कि अंदर से जब हम डाई डालते हैं तो ट्यूब खुल जाती है, वो उसमें परेशानी नहीं, वो अंदर की सतह में, लेकिन बाहरी बहुत सारी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें चिपकन होता है, जिसमें ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड होता है। तो हम इसे हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी एक ही सेटिंग में दोनों काम करते हैं, और जब हम दूरबीन डाल के पेट में देख लेते हैं एक बार, तो वहाँ हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो बाधक हैं, जो डेटरेंट हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं होने दे रही हैं फीमेल को। जैसे हम वो अंडे को ट्यूब जो है वो ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, ट्यूब अंडे को समा नहीं पा रहा है, उसको कैच नहीं कर रहा है। तो फिम्ब्रिया जो है, ट्यूब्स का सबसे किनारे का हिस्सा जो होता है, उसके बारे में हम HSG टेस्ट से या हम सोनोसैल्पिंजोग्राम से भी उसकी फंक्शनैलिटी को, कि वो कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो नहीं जान सकते। वो कितनी बेहतर तरीके से, कितनी सक्षम रूप से काम कर रहा है, कितना सक्रिय है अंडे को कैच करने में, अंडे को उठा पाने में। अंडा कहीं, ट्यूब कहीं, कोई किस में चिपका है, कोई किधर उलझा हुआ है, ये सारी चीजें हमें अर्ली स्टेजेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस में भी मिलती हैं। जब हमें एंडोमेट्रियोसिस में चॉकलेट सिस्ट देखने को मिलता है तो वो लेट स्टेज हो गया। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 राइट। एंडोमेट्रियोसिस जो है अर्ली स्टेज है, इसमें पेरिटोनियल फैक्टर्स होते हैं, इसमें इम्यून ऑल्टरेशंस होता है, जो कि अच्छे अंडे भी नहीं बनने देता, और ट्यूबल कॉम्प्रोमाइज भी, थोड़ी थोड़ी चिपकन होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम उधर से ही उसको हम एडिशंस को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ट्यूब ओवेरियन रिलेशनशिप को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्रोस्कोप में देखें तो कहीं क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस है,
छोटे माइक्रो पॉलिप्स हैं, या फिर कहीं पे वस्कुलर ज़्यादा है वहाँ पे, और कहीं पे ट्रॉफिक पैचेस हैं, कहीं छोटा सा पॉलिप है जो प्रेगनेंसी को चिपकने नहीं दे रहा है, कहीं ट्यूबरकुलोसिस है, कहीं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज सिंपल उसकी वजह से इन्फेक्शंस है। तो राइट। तो ये सारी ट्यूबल फैक्टर्स हैं जो कि हम जब तक दूरबीन नहीं डालेंगे तो हम नहीं जान सकते एग्जैक्टली क्योंकि जो भी हमारे बॉडी के अंदर होता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, जिसको हम रियल टाइम में नहीं देख पा रहे हैं कि अंडा और शुक्राणु मिलकर जो भ्रूण बना रहा है, जो फेलोपियन ट्यूब में बना रहा है, फेलोपियन ट्यूब वो भ्रूण को ट्यूब की पेरिस्टॉल्सिस की वजह से, ट्यूब की सक्रियता की वजह से उसका काम है ट्यूब को, प्रेगनेंसी को ले जाना, वो भ्रूण को ले जाना यूट्रस में, 5वें दिन में वो चिपक रहा है। तो ये सारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। तो ये जितनी भी चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रही हैं जो कि हम रियल टाइम में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इवन कि हम ऐसे डायरेक्ट भी देख रहे हैं लेप्रोस्कोपी से, तो भी हम उसकी कुछ डिटेल मिस करते हैं, क्योंकि सारे जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का जो मेन वजह है वो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। तो कभी अंडे का खोल जो होता है, जो बाहरी लेयर है, वो जोना पेलिसिडा जिसको कहते हैं, वो कड़क होता है, जिसकी वजह से भ्रूण बनता ही नहीं है, स्पर्म आया उसमें चिपक ही नहीं रहा है, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सूरत में हमें आईवीएफ सजेस्ट करना पड़ता है। पहले तो हम स्टेप वाइज जाते हैं कि कहाँ पे क्या फैक्टर्स, किस तरह से उसको डील करें। तो पहला है कि हम ट्यूब्स को हम देखें, ट्यूब के लेवल पे तो हम हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी करेंगे। फिर अगर हमें ऐसा लगे कि इसके बावजूद भी हम, जो गोल्डन विंडो होता है जब लैप्रोस्कोपी करने के बाद, वो हमारा 6 महीने का है, जिसमें हम ट्राई करते, कपल को ट्राई करने कहते हैं कि देखिए बस इसमें बहुत हद तक हमने सब चीज़ सेट कर दिया है, सब रिलेशनशिप्स और जितना चिपकन और अडीजन सब को लाइज कर दिया, ठीक कर दिया, और उसको एक एनाटॉमिकल रिलेशनशिप में ले आए हैं। उसके बावजूद भी फिर कुछ नहीं कामयाबी हासिल होती है, तो हम उसको फिर आगे बढ़ते आईयूआई अटेम्प्ट करने कहते हैं। आईयूआई इसलिए ज़रूरी है कि कभी सर्विक्स जो बच्चेदानी का गर्भाशय का मुंह होता है उस पर इन्फेक्शन होती है, कभी उसमें एक्ट्रोपियन होता है, कभी इरोजन होता है, कभी लंबे दिनों से, तो उसको हम ठीक करेंगे, कॉटराइज करें, लेजर करें, जो उसका निवारण है वहां से, क्यों वो स्पर्म वहां पे एक अवरोध बना हुआ है, तो आईयूआई करेंगे तो वो ब्लॉक को हम आगे जाके डायरेक्ट अच्छे सेंट्रीफ्यूज करके गुड क्वालिटी स्पर्म्स हम डाल सकते हैं यूट्राइन कैविटी में। तो वो सर्वाइकल फैक्टर या एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज है, तो वो हमारी जो परेशानी है वो वहां से दूर हो जाती है। तो आईयूआई के भी सेशंस कर लिए और फिर भी हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, हमें प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो रही, तो फिर हम ऐसी केसेस में डायरेक्टली ही, अगर मान लो जोना हार्डनिंग है या स्पर्म्स में कमी है, स्पर्म्स में भी शुक्राणु में सब चीज नॉर्मल रहने के बावजूद भी बहुत कुछ नॉर्मल नहीं रह। राइट। Can you hear me, doctor? Viewers, can you hear my voice? So आप प्लीज मैसेज में लिखेंगे because I don't know whether it's doctor's network or mine. Can you hear my voice? Anybody can write. Okay, great. Am I Thank you. या Yes, ma'am. स्पर्म में Yes, ma'am. सबसे इम्पोर्टेंट अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के केसेस में जो हम स्पर्म फैक्टर शुक्राणु के लेवल पे, हमें डीएफआई बहुत हेल्प करता है। डीएफआई इज डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, ये मेल में Right. बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर ये 30% से ऊपर है, यानी कि उसकी डीएनए ज्यादातर वो उसकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो प्रेगनेंसी अचीव कर सके, वो फर्टिलाइज कर सके, या फिर फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो रिकरेंट आईवीएफ फेलियर्स हो जाएगा, या रिकरेंट नेचुरल प्रेगनेंसी फेलियर्स हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो वो जो न्यू डीएनए का जो
जो स्पर्म के हेड में होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म वहां पे नहीं होता है, तो ये बड़ा वल्नरेबल डैमेज होता है डीएनए फ्रैगमेंटेशन। तो उसको पहले हम लाइफस्टाइल करेक्शन बोलते हैं, फिर कुछ कोएंजाइम क्यू एंड ऑल दीज मेडिसिन जो सेमिनल प्लाज्मा पे वर्क करती है और उसको इम्प्रूव करने की। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस हैं तो डीएनए फ्रैगमेंटेशन को करेक्ट करने के लिए, और स्ट्रेसफुल लाइफ्स नहीं रहना है। तो ये डीएनए फ्रैगमेंटेशन एक बहुत ही अहम टेस्ट है जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के केसेस में, कि अगर हम उससे वो इम्प्रूव कर जाता है, यानी फ्रैगमेंटेशन अगर की दर, जो डीएनए टूटने की दर जो कम। है वो डैमेज की दर 30% या 25% से ऊपर है, ऐसे केसेस में फिर हम उसे इक्सी पेशेंट को करने कहा जाता है, कि आईवीएफ के लिए ऑप्ट करने कहा जाता है। अगर पेशेंट खास करके ज्यादा वक्त गंवा चुकी है, एज 33 या 32 या 35 से ऊपर हो गया है, और फिर हम ज्यादा साइकिल्स ऑफ आईयूआई नहीं ट्राई करते हैं, 3 to 4 cycles, we cannot allow, because why waste time unnecessarily, because उससे बहुत निराशाजनक स्थिति हो जाती है, और बहुत पेशेंट को साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स भी होने लगता है। राइट। तो एक बहुत जी तो डॉक्टर, जैसे कि आपने बोला कि जब हम एचएसजी करते हैं, सो वी कैन नॉट टेल एग्जैक्टली दैट इफ योर ट्यूब्स आर डैमेज्ड और नॉट। इट्स लाइक कि हम ऊपर ऊपर से उनको देख रहे हैं। सो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स यूजुअली बोलते हैं कि गो फॉर लेप्रोस्कोपी, एंड पॉसिबिलिटी है कि अगर कुछ छोटी एडहेशंस हैं तो लेप्रोस्कोपी कैन रेक्टिफाई दिस। सो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर डॉक्टर ने किसी को एचएसजी रिपोर्ट देखने के बाद ये कहा कि यस प्लीज गो फॉर लेप्रोस्कोपी, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस मेथड? बिकॉज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं इससे रिलेटेड कि लेप्रोस्कोपी क्यों करवानी है जब ट्यूब तो ठीक ही दिख रही है, बट देयर सम वो अदर इश्यूज। ट्यूब की अंदरूनी सतह से दवाई निकल के बाहर स्पिल होती है, तो दो तीन इम्पोर्टेंट चीज है। एक तो है कि अगर दवाई स्पिल हो रही है तो वो रेस्ट्रिक्टेड स्पिल है कि फ्री स्पिल है। अगर जो जिस वक्त एचएसडी परफॉर्म कर रहे हैं तो दवाई को डालने में कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, अगर बहुत ही प्रेशर से दवाई जा रही है, इसका मतलब ट्यूब के हिस्से में बड़ा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ट्यूब। रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब ट्यूब में जो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो जो उसमें नर्म होना चाहिए, और उसको जितनी पेरिस्टोल्टिक एक्टिविटी करने की क्षमता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। ट्यूब थोड़ी सी रिजिड हो गई है, वो अपनी एक्टिविटी में उतना लचीलापन उसमें है ही नहीं कि वो अंडे को अपने आप में उसको अंडे को पा सके या अंडे को समा सके। अंडे को कैच करने के लिए उसको जितना वो रिजिड या टफ या थिकन ट्यूब नहीं होना चाहिए। और ये चीज तो मतलब वो अंदरूनी में खुली है, पेटेंट है, मगर फंक्शनैलिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज। तो ये आई कुछ थिंक दीज आर हम ये टू डिफरेंट थिंग्स। या राइट, राइट। कुछ हद तक हम उसी वक्त जान जाएंगे कि ट्यूब जो एचएसडी कर रहा है, और कुछ हल्के फुल्के जो कलेक्टेड ब्लॉक्स हैं वो तो प्रेशर से ही खत्म हो जाते हैं, मतलब निकल राइट। जाते हैं। बहुत बार बहुत सारे केसेस में सिंपल एचएसडी के बाद ही प्रेगनेंसी आ जाती है, जो मामूली सिर्फ ट्यूबल फैक्टर की वजह से है, और जिसमें कहीं ना कहीं छोटा कचरा कहीं फंसा हुआ है, और ट्यूब का किनारे वाला हिस्सा कहीं चिपकन तो नहीं है, फिम्ब्रिया कहीं एग्लूटिनेटेड है, यानी चिपक के गोल हो गया है, या ओवरी या पीछे हो गया है, या कहीं पे फिम्ब्रियल सिस्ट है। तो बाहरी सतह ट्यूब के बाहर का हिस्सा हमें हम उसको पेरिटोनियल कैविटी में जब तक नहीं जाएंगे, एब्डोमिनल कैविटी में, तो हम उसके बाहरी हिस्से में कहाँ चिपकन है, कहाँ फंसा है, उसमें उतना लचीलापन है कि नहीं, वो किस तरह से ट्यूब और ओवेरियन रिलेशनशिप प्रॉपर है कि नहीं, और वो किस किस तरह से ट्यूब बिहेव करेगा, वो इवन लैप्रोस्कोपी करने के बाद भी हम देखते हैं बहुत तरह के ट्यूब्स हैं। फिम्ब्रिया, multiple types of fimbria with the females are seen. Sometimes there are short fimbrias, sometimes there are very flowery beautiful flower petal like fimbrias which are supposed to be very good fimbrias.
despite that somewhere it is very stunted and it is swollen, it is hyperemic, it is having lot of congestion, infection, they are all stuck up together. So in these cases we with the scissors and everything, with our intervention, we try to improve and maximize and optimize the रिलेशनशिप, और उसकी जितनी चिपकन वगैरह हम उसको दूर करना चाहते हैं ताकि वो थोड़ी सी फंक्शनल एबिलिटी उसकी हाँ, improve हो जाए. That is why it is an utmost and the first tool importance to go for a laparoscopy when the tube seems to be compromised on an HSG हाँ, plate. But even ओ- when we on in laparoscopy also we can at least we can infer, हम ये जान सकते हैं, नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हाँ इसमें हमें कितनी कामयाबी होने वाली है. तो 6 महीने हम उसको ट्राई करते हैं, जो गोल्डन विंडो जो हम कहते हैं, जिसके बाद लेप्रोस्कोपी करने के बाद कि इसमें कितनी, कभी देखेंगे अंदर जैसे गए तो बड़े बड़े सिस्ट तो नहीं है, चॉकलेट एंडोमेट्रियोसिस, छोटे 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 बारूद की तरह या मालूम ब्लड के थक्के की तरह पूरे में पेरिटोनियल कैविटी में एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स होते हैं. तो वो हाँ, जो है वो बहुत ही पेरिटोनियल एनवायरनमेंट को इम्यूनोलॉजिकली ऑल्टर कर देते हैं. जैसे एग निकला, स्कैवेंजिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि वो उसको खा जाते हैं. और हाँ, ट्यूब जो है वो ओके, अंडा को ले ही नहीं पा रहा है. तो राइट, ट्यूब का काम है अंडे को लेना, और स्पर्म आता है ट्यूब में और भ्रूण वहां बन जाता है, फिर ट्यूब उसको ट्रांसफर करता है. एक्टोपिक इसलिए हो जाता है कि ट्यूब्स में अगर इन्फेक्शन रहा हो, या एंडोसल्पिंग्स, ट्यूब के अंदर जो छोटे छोटे रेशे होते हैं और छोटी छोटी बाल नुमा जो सीलिया होता है, वो सीलियरी डैमेज की वजह से वो ट्यूबल जो एम्ब्रियो है वो ट्रांसफर नहीं हो जाता है, ट्रांसफर नहीं हो पाता. 5वें दिन तक उसको पहुंचना होता है यूट्रस तक ब्लास्टोसिस बनने के बाद. तो वो वहां नहीं हो पाता है, तो वो वहीं पे प्रेगनेंसी ग्रो करने लगती है. कभी ट्यूब में कोई इन्फेक्शन है, ट्यूबल फ्लूइड है, पस है, तो ये सारी क्रॉनिक इन्फेक्शंस में हम पाते हैं ये सारी चीजों को. तो अगर कोई डॉक्टर ऐसा मशवरा दे रही हैं तो वो एचएसजी प्लेट को देख के, तो ये बारीकी और गहराई से लेप्रोस्कोपी करने का एक बड़ी वजह है, जिससे हम बहुत सारी चीजों का निदान और निवारण कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ट्यूबोवेरियन रिलेशनशिप जहां तक संभव है. और ताकि वो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है पेशेंट को. लेप्रोस्कोपी करने के बाद हम देखा गया है कि जल्दी प्रेगनेंसी आ जाती है. हाँ, राइट. सो फॉर ऑल दोज व्यूअर्स जिनके सवाल ट्यूब से ही रिलेटेड थे, बिकॉज एज वी नो फेलोपियन ट्यूब इज रियली इम्पोर्टेंट और उनकी पेटेंसी इज इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर ट्राइंग फॉर नेचुरल कंसेप्शन. सो अगर आपके डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपी सजेस्ट किया, या डॉक्टर ने बोला कि आई रियली नीड टू चेक द ट्यूब मोर क्लोजली, देन प्लीज डोंट डिले. एंड एज डॉक्टर इमराना मेंशन्ड, हो सकता है कुछ एक लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट से आपकी ट्यूब्स ओपन हो जाएं और आपको आईवीएफ या आईयूआई में जरूरत ही ना पड़े. सो डॉक्टर, वी हैव वन क्वेरी, आई विल जस्ट हाईलाइट इट. हाँ वन जी, प्लीज. that just I wanted to interrupt, like open तो वो रहती हैं एचएसडी में, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में. फंक्शनल नहीं है, राइट. राइट, फंक्शनैलिटी आई थिंक यही, हाँ बिल्कुल यही शब्दों का हेर फेर है. ओपन है लेकिन फंक्शनल नहीं है. इसीलिए हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि आप जब भी डॉक्टर सिलेक्ट कीजिए तो थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट कराएं, तो हमें जरूर बताइए. सो डॉक्टर, वी हैव वन क्वेरी ओवर हियर. My laparoscopic report found okay, and my AMH level is 2.19. My husband's DFI report range 23%, which is good as per my doctor said. Please suggest what is the next step should I go for? IUI failed 3 times. If you are in a great hurry and how many years have passed by, what is the age of the patient, like what is the right now the age of the patient, and the patient is really she can go for an IVF, because if we wait further the AMH is going to decline algorithmically every year. The AMH goes on declining.
not be able to harvest many number of eggs. So right now it is 2.19. It's good egg number, and might be good egg quality as well. So it's better if 3 times IUI fail, go for an IVF, because the DFI is Uh, also good. So there are a so lot of doctor, chances age, that. she mentioned her age. Her age is 33. So I think it's quite a cutoff age for Indian females. 33 के बाद से यहाँ हिंदुस्तानी औरतों की जो ये है AMH वैल्यूज डिक्लाइन करना तेजी से शुरू करती हैं, और तो वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं. आई थिंक शुड गो फॉर एन IVF, and I think 102% I'm sure that going to get results positive. Great. As I see that you are still in the session watching us live, so please इस suggestion को, इस guidance को थोड़ा seriously लीजिए, and please go and meet your doctor again. And if your doctor is suggesting you to go for IVF, then please move ahead. और हमारी तरफ से आपको कुछ भी help चाहिए तो please feel free to connect with us. So वजह thank you, ये है, doctor. I think या सॉरी, वजह ये है कि एट व्हेन एवरीथिंग इज राइट वी गो फॉर द राइट थिंग. लाइक right, राइट is okay, DFI is okay, age is okay. Like quite not quite an age. She has age to her side, but why not? Why take run a risk of doing an IVF at further age when the eggs will decline? When right, might happen right. when the more of the compromise is there? Why not do it at the best time? Right, So because we can see that the thing, like I think the AMH value is also quite good. It is more than 2. yeah, so right now they'll be getting good harvest of eggs, and everything is in perfect sync. So that is one thing, that right now it's in a good time for an IVF, or they can try 3 more cycles of an IUI. So just please take this advice very seriously because we really want you to have a healthy pregnancy. So, doctor, we have one more query. My right kidney is in middle. Can one tube get blocked because of that? My age is 28. Puja, no issues, because kidney is a retroperitoneal organ. It is beneath the peritoneum. It is not in a visceral organ as your uterus and tubes. Kidney is at the back. So even if it is in the front, it is besides the. It is covered by a layer of peritoneum. So it is no way getting obstructing your tube. Not at all possible anatomically. Even if it is in the Okay, front, the kidney, it is not going to obstruct your tube anyway, because it is a retroperitoneal organ. Besides the peritoneum, it is covered by okay, a totally one layer of tissue, and both of them is not are not going to come in contact with each other at all. great. So don't worry about this situation. So, doctor, what we can suggest for her because her age is obviously she's at a very good age, 28. No, she has a. She told me about an ectopic kidney. She is not. One tube is blocked, One but tube, yes. having one tube open, we can get pregnancy through one tube. But how beautifully it is open, that we can see on Oh, an HSG, that is important. Or we can go for a sono salpingogram, that is by an ultrasound, putting a normal saline, seeing the spill, and an ultrasound will also tell about the status of the kidney, one session of that, and then she can go ahead and try an IUI or whatever if it is needed. So hmm, it depends on the entire report, but right now she's only asked about her one tube, not stated her AMH and all, and right, the husband's final parameters have to be okay. right. So if you are still in the session and you want to ask your queries much in a deeper way, then please do post it. So, doctor, again, very important question and I think very vital or very commonly asked. आप भी हर रोज सुनते होंगे कि how much rest is required after embryo transfer. This is, I think, it's like the one of the commonest questions that we are getting regularly in our sessions. And so please, expert comment from your side on this.
Actually, no rest required. 10 minutes is okay. You can walk after half an hour, pass urine, move about, go everywhere, because it is all the more helpful. If you rest, it is not desirable. The global reports, there are multi-center reports from across India, and even abroad, the globe, from outside the HRA and the guidelines, they do not say any rest. European societies and the American societies, even intercourse is allowed. But people are so scared after spending so much of money, and they are so really bothered because it is not allowed, because it might lead to some infection that may Right. lead to some problems. Otherwise, no rest required. I do not ask my patients, they go and they join their max to max, because Okay. for their satisfaction that I have rested, they rest for 7 days, or but no strict bed rest at all. They can do their normal course, normal activities, no strict bed rest, and they can do everything. But somehow the patient themselves and the family members, so who is the peer groups, they only somehow put them in their head and keep on emphasizing regarding this rest part. Otherwise, I always say, join your duties, do whatever you like, but do not lift very heavy weight or venture into any activity that crosses any kind of a threshold. So डॉक्टर आई थिंक दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारा मानना है कि रेस्ट करेंगे तो सारा दिन एक ही बात आपके दिमाग में रहती है, ओ गॉड अब क्या होगा, मैं इधर टर्न हो गई तो एम्ब्रियो किधर गया, मैं उठ के बैठी तो क्या हुआ, इट्स लाइक वेरी कॉमन. सो कीप योरसेल्फ बिजी रियली, प्लीज. एम्ब्रियो कहीं पे चिपक जाता है उसी वक्त, और फिर वो अपनी जगह बनाने लगता है, अपना आशियाना बनाने लगता है. और वो बहुत जरूरी है, जब तक वो अपना नीश नहीं बनाएगा और चारों तरफ से उसके ब्लड वेसल्स आके उसको कवर करते हैं, फिर सारे सेल्स आके कवर कर लेते हैं, वहीं पे वो ग्रो करने लगता है ब्यूटीफुली टू मेक अ बेबी. एंड द एम्ब्रियो an exponential rise in the number of the cell divisions as well. The moment on the day 3 you have good morula, blastocyst, and then it keeps on changing shapes. By the time this thing is detected, it is already, and by 7-8 weeks you can see a lot of things. It has to be form and beautifully grow into a human being. So everything gets designed by God. So वो इधर उधर आई कुछ थिंक होना नहीं है. होना नहीं है, ये आपने इतनी सुंदर इतने अच्छे तरीके से बोला, आई कुड जस्ट विजुअलाइज कि वो इतना छोटा सा एम्ब्रियो था, वो धीरे 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 इतना बड़ा हो गया. सो व्यूअर्स, वी रियली वांट ऑल ऑफ यू टू हैव दिस फीलिंग. एंजॉय कीजिए, प्रेगनेंसी बहुत बहुत अच्छी चीज है. वो एक प्लीज. नुक्ते की तख्लीक अपने ऊपर से हुई, एक नुक्ते बराबर, एक नुक्ता के बराबर, एक बिंदु मात्र है वो, और भगवान उसकी तख्लीक करके इतना बड़ा इंसान बनाता है. बिल्कुल, ट्रू ट्रू. So let's take another query related to sugar levels. I think this is on a rise in our country. So IVF के लिए शुगर टेस्ट करवाना जरूरी होता है क्या? बहुत जरूरी. ये सारी चीजें, सारे कोमॉर्बिडिटीज जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में अब ये सारी चीजें आती हैं, जैसे हमारा थायराइड है, शुगर है, और जितनी ये इसको ऑप्टिमाइज करके रखना है हमें. शुगर, अगर इससे सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू हैव टू टेस्ट योर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, है ना. तो HB1AC, what we call as, you can roughly, because of fasting and the PP status might get altered sometimes, because you might be fasting in the night, you have to give a sample, produce a sample tomorrow. No, maybe you are really panicky about it, and you are disturbed about the thing, you might get not a good report, so that will falsely lower your sugar status and the sugar levels on the report. But actual reflection of the sugar is through glycated hemoglobin, HB1AC. So this reflects your 2 months previous control
पिछले 2 महीने में, बीते 2 महीनों में कैसे आपने अपने शुगर के स्तर को रखा है ठीक, और इसको 6.5 से नीचे रखना है। अगर हमें ये स्तर मिलता है 7, इट्स ओके, यू आर एक्सक्यूज्ड, बट एनीथिंग बियॉन्ड, like to start a journey of an IVF, to embark onto an IVF with a bad sugar level is really bad, because जो शुगर जो है ये बहुत ही ज्यादा एम्ब्रियोजेनेसिस पे इफेक्ट करता है, और जो सारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो पहले 3 महीनों में है। जो जो एम्ब्रियो तो बढ़ता रहता है, बट जो उसके सारे अंग बनते हैं उसमें विकार शुरू हो सकता है, वो विकृत हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, तो कोई ट्यूमर का जेनरेट हो जाना, कोई स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटी आ जाना, कोई कॉर्डल, देयर आर लॉन्ग लिस्ट ऑफ हार्ट में छेद, सुराख, कुछ भी, वो पूरे ही ऑर्गन्स की ऑर्गेनोजेनेसिस खराब हो सकती है। अगर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन 10 के ऊपर है तो प्रेगनेंसी अलाउड ही नहीं है, अगर 8.5 है तो भी अलाउड नहीं है। और क्योंकि आईवीएफ में और खास के अगर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर हम कराने जाते हैं तो उसमें एस्ट्रोजन देना पड़ता है, तो वो शुगर को और बढ़ा देता है। तो प्रेगनेंसी आने से तो वी गो फॉर इंसुलिन टू जस्ट ऑप्टिमाइज द शुगर लेवल्स एंड ग्लाइसेमिक स्टेटस। It's always advisable to go for insulin and not stick to that old. Only metformin is allowed in the tablet form, oral hypoglycemic drugs, because ये इंसुलिन सेंसिटाइजर है और हाइपर इंसुलिनीमिया को कम करता है और हेल्प करता है प्रेगनेंसी आने में भी। तो मेटफॉर्मिन हम चलाते हैं लेकिन इंसुलिन पे स्विच कर जाते हैं, लेकिन ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन before embarking onto any IVF procedure should be less than 6.5 or around 6.5, should always be less than 7. Any pregnancy is not allowed, because all the sugar, pregnancy itself is a diabetogenic condition. जितनी हॉर्मोन्स प्रेगनेंसी में लिबरेट होती हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, प्लेसेंटोट्रोपिक हार्मोन है, ये सारी हार्मोन ये इंसुलिन के अगेंस्ट है। ये जितनी भी, ये सब शुगर को बढ़ाती हैं, और ये सारी का स्तर सब प्रेगनेंसी में बहुत बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी खुद ही एक डायबिटोजेनिक कंडीशन है, इसमें फिर आप ऑलरेडी शुगर हाई में एंटर करेंगे तो वो फिर और वो उसको वर्स्ट कर देता है। तो अबॉर्शन के भी चांसेस हैं, कुछ एम्ब्रियो में विकार आने के चांसेस हैं, और पेशेंट के लिए खास के पोस्ट प्रांडियल शुगर्स जो कि खाने के बाद जो है वो ओबेसिटी की चांसेस है बच्चे में, और फिर शुगर होने से इंट्रायूट्राइन प्रोग्रामिंग भी होती है बच्चे की, इसी तरह की जो फ्यूचर बेबी है वो भी डायबिटिक होगा बाद में बड़ा होके एट द एज ऑफ एट द एडोलेसेंस में। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। So it's Right. always very, very important to first control your sugar to a level. By any means, you have to contact your diabetologist who is over undertaking your case, and to keep it at 7 or less than 7. It is desirable to keep it at that level, and then you enter into, because even in IVF you use a lot of if we are going for a transfer, embryo transfer, we use hormones, and estrogen hormones, they are going to elevate your sugar levels further, so that will add to the misery. It makes your life more miserable. राइट। आई थिंक हर एक छोटी चीज इम्पोर्टेंट है। एंड डॉक्टर, we have many queries related to weight also. So being overweight could be the reason for infertility. Is it really so? Yeah, even in IVF we ask the patients to cut down the weight. Any weight which is beyond 75, I think it is not um, even in IVF for something. They should have weight, actually have more than weight, it is a BMI, your height to weight ratio. So that is important, because BMI above 25 is overweight, and above 27 is obesity. So it's very important to keep it less than 25, your waist circumference as well, less than 100. And because BMI is something height to weight, accordingly, we always suggest pregnancy do occurs, but it obesity or overweight, being overweight, it adversely affects ovulation and the egg quality.
Your egg quality will be compromised if you are overweight, and you will be not producing and ovulating regularly when you are having your weight, and that is quite a deterrent, because the leptin and all the hormones and testosterone, androgen, these will go haywire. So these are going to disrupt your entire hypothalamic pituitary ovarian axis, and this is not will not allow generate more number of follicles and good quality follicles. Right. So look for very small, minute details if you are trying for conception. And as Dr. Imrana mentioned just in the beginning, कि unexplained को explained करना बहुत जरूरी है. So doctor, in right, we have this query. Okay. So when we talk about IVF, so हमारे पास बहुत सारी, I think 5-6 queries हैं इससे related. Thin endometrium lining. So people are asking, when I was not under IVF treatment, I used to go for follicle monitoring. At that time, my endometrium was normal. But again, when I started with the IVF treatment and now I am going for transfer, a doctor is not finding my endometrium thickness up to the mark. So is the treatment or the injections affecting my lining? So basically she is talking about thin endometrium lining over here. So thin endometrium has to be really minutely taken. That's very important, because the Doppler flow, we have already discussed in previous also, that you have to enable a power Doppler, and it has to go, I mean, reach a zone 3 or zone 1 even, to make an endometrium has to have above 7 millimeters, and maybe she has gone for a freeze all. I mean, her eggs are frozen already, and she Right. is on. Yeah. So, what kind of, if she's taking in oral tablets and different forms of, She's so taking. first of all, it is, yeah, it's important to rule out any adhesions. Sometimes there are a lot of hysteroscopy is important in this case, to look at whether the endometrium, thin endometrium, there are some adhesions, or how badly it is affected, right? Like whether there is any blood flow in that endometrium. Hysteroscopy can be, and hysteroscopic PRP can be given, and very importantly, different forms of hormones can be tried. Sometimes biopsy can be taken, or given for an anti-tubercular, so TB PCR thing, and sometimes that also helps. A chronic endometritis has to be treated if it is there, with a 21-day course of a doxycycline, etc., or a sinomycin, and anti-TB drugs can be initiated if there is a if endometrium. We take the sample of the endometrium blood and subject it to TB PCR or a biopsy. And the culture, it's very difficult, because the TB is pandemic in India, and almost everybody, if we come, the culture reports might go negative, and many people are on many, and like levofloxacin, different kind of antibiotic, that results in negative reports. This can be a pointer. If there is any infection, has to be ruled out. If there are adhesions, has to be ruled out. The different formulation of the drugs, if the oral hormonal tablets are not working, then she can be tried for spray form, a lot of spray and gel forms. So spray, gel, vaginal gel, and then oral. All these combined therapy can help you get a good, beautiful endometrium. Sometimes no therapy, and your endogenous hormones are better. So your endogenous hormones, so it can be tried in the natural cycle. So you can try naturally if your endometrium grows naturally without any help of any hormones. This can also happen. You can go one cycle natural, and you just evaluate without the help of hormones how your endometrium grows naturally. If the endogenous estrogen which is in your body, जो पहले से जितनी स्तर है, हम बाहर से एस्ट्रोजन दे रहे हैं, उसको शट डाउन करके, एचपीओ एक्सेस को शट डाउन करके, अगर हम एचपीओ एक्सेस को शट डाउन नहीं करें, उसको हम चालू रहने दें, और बाहर से एस्ट्रोजन नहीं दे के हम नेचुरल साइकिल में भी देख सकते हैं कि वो कैसी लाइनिंग आ रही है, और उस पर डॉपलर डाल के देख सकते हैं कि कितनी ला रही है. अगर उसमें आ रही है तो उसको भी ले सकते हैं, हम उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं. और Right. नहीं तो डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं.
एस्ट्रोजन के टैबलेट में देखें, टैबलेट को सिर्फ बढ़ाने से ज़रूरी नहीं, तो हम जेल डाल सकते हैं, हम स्प्रे डाल सकते हैं, और लिंजेटो स्प्रे इज़ वेरी गुड. And we have a gel form in vagina, gel form, sorry, not vagina, gel forms is also available. And so that also helps different formulation, because you never know which receptor where for the estrogen is working, and it is opening up, and maybe your estrogen is the liver is more destroyed, and we are not achieving that right therapeutic serum concentration of the liver for the beautiful elaboration of that lining. And so it might happen that more estrogen is destroyed in the liver. So that is why we have you can go for multiple combination of the estrogen administration, and in the gel spray. And these linzetto spray is really good, and it produces a triple beautiful line. I think I can advise that to you. And after ruling out, of course, hysteroscopically infections and chronic endometritis. So I would suggest viewers कि इतने सारे, हाँ जी, please doctor, please. नेचुरल साइकिल इवन you can see कि ये सब Right. पेज में हम लुपोडेक्स ना दे करके एक साइकिल हम उसको नेचुरली देखते हैं, कि जब उसको नेचुरल जब वो करा नेचुरली उनको आया है, अच्छी लाइनिंग बनी थी, तो उसी And तरह से उसको नेचुरली देख सकते हैं, जरूरी नहीं है दवा देना. राइट एंड आई थिंक हमने काफी बार सुना भी है कि नेचुरल साइकिल ट्रांसफर सक्सेसफुल हुआ है. सो आई वुड सजेस्ट व्यूअर्स, आप प्लीज ये पोर्शन, ये पार्ट जहाँ पे डॉक्टर इमराना ने मेडिसिन से रिलेटेड चीजें बताई हैं, उन्होंने मेडिसिन के नाम लिए हैं, जेल्स के नाम लिए हैं, उस पोर्शन को आप प्लीज दोबारा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज एज अ लेमैन, मी एंड यू, वी डोंट interact with medicines on daily basis, तो थोड़ा सा एकदम सुनने से निकल जाता है. Just go through the session, I would suggest, especially that part, and then you can discuss these options with your doctor, and hopefully आपका लाइनिंग दोबारा वापस आएगा. और अगर नहीं तो नेचुरल साइकिल इज ऑलवेज एडवाइजेबल इन सच केसेस. डॉक्टर, विल टेक वन another query over here. PRP can options if we are doing it राइट, nicely. पीआरपी बिल्कुल. आई थिंक पीआरपी के भी बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, काफी सब में केसेस सुने हैं. 20% cases में आ जाते हैं. 20% cases we get results. Not all the patients, as not all the one shoe size doesn't fit all. Similarly, like it varies from patient to patient. अब क्योंकि हम clock patient को off करके we are doing it artificially, and we are राइट. generating the same environment, we're simulating the environment. So it we can, if nothing works, then a PRP can be one of the options. Right. So try your options, just give your 100%, and rest assured your doctor will do the best possible treatment for you. So, doctor, we have another question. Can low sodium level in the blood lead to unexplained infertility? Low sodium level is something which we find in the elderly females or an athlete, because they usually these females are exercising a lot, and they sweat soups, sweating Right. soup. Yeah, so they sweat a lot, and once they sweat a lot, they lose a lot of electrolytes in the sweat. So that might lead to a low sodium level. So they should stop exercising and go for an alternative form of exercise. Not I am not aware, like, but it is not directly related to low sodium level leads to an unconscious level. Most important is that that low sodium cannot be persistent. It has to be taken from like how you determine the low sodium, not from the lab. Lab errors can be there, and it can vary from lab to lab. And the low sodium is a little this thing very dicey, and I cannot say low sodium has to be low sodium as a key, because if there is low sodium, there is potassium, there is bicarbonate, lot of electrolytes are there. So you have to go for an ABG analysis, that is arterial blood gas analysis, and that will tell you. And then why low sodium and young age, I don't believe it, unless you have some problems related to Cushing or adrenal diseases and all those things, or some comorbidity is hypertension and all. So low sodium can, as a single entity,
In a young female, I really doubt it is a lab error, or it can be in an athlete where they who exercise a lot and always on a spree, and so I am really skeptical about this very phenomena. So I think you can go back and check the details, and फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यही पर्टिकुलर एक रीजन समझ में या सामने आ रहा है, then please go visit your doctor, and if you want any help from our side, then please do let us know. We'll definitely call Dr. Imrana again, or we can arrange for your teleconsultation. But believe me, अगर कुछ है तो उसका हल है, और अगर unexplained है तो let's try to make it explained first, then we can treat it, and obviously the results could be happy results for you. So let's summarize the session. हमने बहुत सारी बातें की आपके ट्यूब्स के बारे में, आपके एग के बारे में, आपकी यूट्राइन हेल्थ के बारे में, मेल फैक्टर्स के बारे में, वेट के बारे में, even towards the end we talk about sodium level also. So कोशिश कीजिए कि हर पैरामीटर को चेक रीचेक करते जाएं ताकि अनएक्सप्लेन्ड शब्द हमारी डिक्शनरी में ना आए. अगर फिर भी ऐसा कुछ है, so IVF is giving tremendous results. जस्ट इतना सा कि आप इतना डिले मत कीजिए कि आपकी एग क्वालिटी खराब होने लगे, आपकी उम्र बढ़ने लगे. हर चीज हर बात सही उम्र में होना बहुत जरूरी है. So do check our coming live sessions and please stay connected with us. Thank you, Dr. Imrana. Thank you so much for joining today for this wonderful session. Thank Seriously, I love talking to you, and on very the top of informative. it on the top of it, I always congratulate you with the beautiful smile and the way you conduct. I mean, you are really an ace in it, and I am so happy to see you or ever always smiling. One thing which I failed to discuss was a uterine microbiome and a vaginal flora health, and in We can have that. Right, right, right. so probiotics can be added most of the times is important because probiotics also give good results if somebody is always suffering from recurrent vaginal infection and Okay. recurrent cervical infection. So there's something which is a new avenues are opened up and a lot of research going on this also. So this is also one of the aspect I missed too. I think, and the most important is not all the patent tubes. The message is that are all it's a functionality which is important, and DNA fragmentation and a lot of these things which you already I think we have covered. So it was wonderful to have you and all my audiences. So I thank them from the core of my heart, and thank you again. So thank you, viewers. Thank you so much for joining. Please do watch this session again. इसी लाइव लिंक पे आपको मिलेगा, देखते रहिए. हो सकता है कोई छोटी सी बात, कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके ट्रीटमेंट को क्लिक कर जाए और आप ही हो जो हमें अगले सेशन से बोले थैंक यू सो मच, आई एम प्रेग्नेंट नाउ. वी आर ईगरली हियरिंग, और हम वेट कर रहे हैं आप सबके इन्हीं सब गुड न्यूज को सुनने को. थैंक यू एवरीवन ज्वाइनिंग. थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू यूएनएस. थैंक यू.